Hello, I am idressdev. Welcome to my channel. Today we're gonna study British drama book 2nd, William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream. Introduction of the play. A Midsummer Night's Dream is a comedy written by William Shakespeare in 1595 or 1596. The play is set in Athens and consists of several subplots that revolve around the marriage of Theseus and Hippolyta. One subplot involves a conflict between poor Athenian lovers, and other follows a group of 6 amateur actors rehearsing the play which they are to perform before the wedding. Both groups find themselves in a forest inhabited by the Fairies, who manipulate the humans and are engaged in their own domestic intrigue. The play is one of the most popular play of Shakespeare and is widely performed. मिडनाइट समर ड्रीम एक मज़ाहिया ड्रामा है। इसको शेक्सपियर ने 1595 या 1596 में लिखा है। ड्रामा एथेंस से शुरू होता है। इसके बहुत से सबप्लॉट हैं जिसमें थीसिस एंड हिप्पोलिटा की शादी शामिल है। एक सबप्लॉट में 4 एथेनियन महबूबों के झगड़े शामिल है। दूसरा प्लॉट एक ग्रोह का है जिसमें 6 गैर पेशेवर अदाकार एक ड्रामे की मशक कर रहे होते हैं जो इनको हिप्पोलिटा और थीसिस के शादी से पहले पेश करना होता है उनकी शादी पर। दोनों ग्रोह एक दूसरे को जंगल में मिलते हैं। वो जंगल परियों से जो है आबाद होता है और इंसानों में खलल पैदा करते हैं। वो भी घरेलू साजिश में मसरूफ होते हैं। Now characters: Theseus, Duke of Athens; Hippolyta, Queen of Amazons; Aegeus, father of Hermia, daughter of Aegeus, in love with Lysander; Lysander, in love with Hermia; Demetrius, suitor to Hermia, former lover of Helena; Helena, in love with Demetrius; Philostrae, master of revolve; Peter Quince, a carpenter; Nick Bottom, a weaver; Francis Flute, a bellows mender; Tom Snout, a tinker; a Snog, a joiner; Robin Starveling, a tailor; Oberon, king of the Fairies; Titania, queen of the Fairies; Robin, which is also called Puck in play. He is a mischievous spirit. Plot of the play. The play opens with Hermia, who is in love with Lysander and resists her father's demand of marrying with Demetrius, with whom his father wants her to marry. On the other side, the Hermia's best friend Helena, who is in love with Demetrius, but he has broken the heart of Helena and is in love with Hermia. Aegeus, the father of Hermia, takes this matter to the Duke of Athens, Theseus, as his daughter isn't obeying his demand of marrying with Demetrius. ड्रामा हर्मिया से शुरू होता है जो लाइसेंडर से प्यार करती है और अपने वालिद के हुक्म की मज़ाहमत करती है कि वो चाहता है कि उसकी शादी डेमेट्रियस से हो जिससे वो उसके लिए पसंद करता है। दूसरी तरफ हर्मिया की बेहतरीन दोस्त हेलेना जो डेमेट्रियस से प्यार करती है कि उसने उसका दिल तोड़ा होता है, वो हर्मिया से प्यार करता है। एजियस जो हर्मिया का वालिद होता है
वो इस मसले को एथेन के बादशाह थीसिस के पास लेकर जाता है कि उसकी लड़की उसके हुक्म यानी डेमेट्रियस के साथ शादी करने को नहीं मानती। As he lost Lysander and wants to marry with him, as per ancient Athenian law, father can decide the suitor for his daughter according to his own wish. If daughter doesn't fulfill the demand of her father, has to face the death. By implying this law to Hermia, Theseus gives her two chances to face death or to become a, a lifelong nun in church and worship to goddess Diana. वो लाइसेंडर से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। एंशंट एथेनियन के कानून के मुताबिक लड़की का वालिद ही लड़की के लिए शादी का उम्मीदवार या शादी के उम्मीदवार का फैसला अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर सकता है। अगर लड़की अपने वालिद के हुक्म को नहीं बजा लाती है तो उसको मौत का सामना करना पड़ता है। उस हुक्म को हामिया के लिए नाफिज करके थीसिस उसको दोनों मौके देता है कि या तो उसको मौत का सामना करना होता है या तो उसको जिंदगी भर चर्च में नन बनकर रहना होता है और गॉडेस डायना की इबादत करनी होती है। In the meantime, Peter Quince and his fellows players Nick Bottom, Francis Flute, Robin Starveling, Tom Snore, and Nick prepare themselves to perform the drama on the wedding of Duke Theseus and Queen Hippolyta. Peter Quince assigns them the role of the characters to perform in the play during the wedding of Duke of Athens and Queen of Amazon. इसी दौरान पैराक्विंस और उसके साथी खिलाड़ी निक बॉटम, फ्रांसिस फ्लूट, रॉबिन स्टाविंग टॉम स्नैग और स्नैग अपने आप को बादशाह और मलका थीसिस की शादी पर जो ड्रामा पेश होने वाला होता है उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। पैराक्विंस इनको ड्रामा में किरदारों को अदा करने का काम देता है जो एथेन के बादशाह थीसिस और अमेज़न की मलका हिप्पोलिटा की शादी के दौरान पेश करने होते हैं। In the meantime, the next plot starts with Oberon, the king of Fairies, and his queen Titania. They have come to arrest outside the Athens. Titania tells Oberon that she plans to stay there till the wedding of Theseus and Hippolyta. They fight on the Indian channeling boy and are estranged to each other. Titania refuses him to give the channeling boy to make him knight because Charles' mother is one of the worshippers of Titania. इसी दौरान दूसरा प्लॉट ओबरॉन जो परियों का बादशाह होता है और उसकी मलका टाइटेनिया से शुरू होता है। वो एथेन के बाहर जंगल में आ चुके होते हैं। टाइटेनिया ओबरॉन से कहती है कि उसने वहां पर थीसिस और हिप्पोलिटा की शादी तक ठहरने का फैसला किया है। वो इंडियन चैनलिंग बॉय पर लड़ते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। टाइटेनिया इसको इंडियन चैनलिंग बॉय देने से इनकार करती है जिसको वो नाइट बनाना चाहता है क्योंकि उसकी माँ टाइटेनिया की इबादत करने वाली होती है। Oberon tries to punish Titania's disobedience. He calls upon Robin, which is called, to help him to bring a magical juice from flower called love in illness. When the juice is being put to the eyelid of a sleeping person, that person upon walking falls in love with the first living things whom he or she is being waken up.
ओबरॉन टाइटेनिया को उसकी नाफरमानी पर सजा देने की कोशिश करता है। वो रॉबिन को बुलाता है, जिसको पक कहा जाता है, कि वो उसको जादुई जूस एक फूल से, जिसको लाविन एथिन कहते हैं, खिलाकर देने में मदद करे। जब इस जूस को किसी भी शख्स के आंखों पर या आंख पर डाला जाता है जो सोया हुआ होता है, तो जागने पर वो जिसको भी देखता है उसके साथ प्यार करने लगता है। He advises Puck to break the plot with the hope that he might make Titania fall in love with an animal of the forest. By this way, he might get the chance to take the Indian changeling boy from her and makes him knight. In the meantime, Hermia and Lysander arrive in the same forest in the hope of running away from the Athenian to get married. Helena tells Demetrius about the elopement of Lysander and Hermia from the Athens towards the forest. वो पॉक को समझाता है कि वो उस फूल का जूस लाए, उस उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि टाइटेनिया उस जूस से जंगल के जानवर से प्यार करे। इस तरह से उसको चेंजिंग बॉय, इंडियन चेंजिंग बॉय लेने और उसको नाइट बनाने का मौका मिले। इसी दौरान में हर्मिया और लाइसेंडर इस जंगल में पहुंच जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो एथेंस से भागकर शादी करें। हेलेना डेमेट्रियस को लाइसेंडर और हर्मिया के एथेंस से जंगल की तरफ भाग जाने की खबर देती है। She tells this to Demetrius in the hope of winning his heart, but she gets failed in her plan as Demetrius follows them in the hope of finding Hermia. Helena also constantly follows Demetrius and promises him to love him more than Hermia, but he rebuffs her with great insult. वो डेमेरस का दिल जीतने की उम्मीद में उसको बताती है, लेकिन वो अपने मंसूबे में नाकाम हो जाती है कि डेमेरस उनका पीछा करता है, इस उम्मीद के साथ कि उसको हर्मिया मिल जाए। हेलेना भी लगातार डेमेरस का पीछा करती है और वादा करती है कि वो उससे हर्मिया से ज़्यादा प्यार करेगी, लेकिन वो इसको झटका देकर उसकी बेइज्जती करता है। Observing this in the forest, brought the king of the Fairies orders the pot to bring some of the magical juice and put on eyelid of young Athenian man. Puck mistakes Lysander for Demetrius, not having seen before, and put the juice on the eyelid of Lysander. In the meantime, Helena comes there and wakes up Lysander to determine whether he is dead or in asleep. इसका मुशाहिदा करते हुए ओबरॉन परियों का बादशाह पॉक को जादुई जूस लाने और एथेनियन के नौजवान आदमियों पर डालने का हुक्म देता है। पॉक लाइसेंडर को डेमेरस समझकर गलती करता है, क्योंकि उसने उसको पहले नहीं देखा होता है और वो लाइसेंडर के आंख पर जूस डालता है। इस दौरान हेलेना वहां पर आ जाती है और लाइसेंडर को जगाती है, ये मालूम करने के लिए कि वो मरा हुआ है या नींद में है। Upon happening this, Lysander wakes up and sees her and immediately falls in love with Helena. Helena is thinking that Lysander is going to make the fun with her and starts running away. But Lysander starts pawing her. When Hermia wakes and sees here and there, but Lysander can't find there, and she goes out in the forest to search him. Oberon sees that Demetrius still follows Hermia. He thinks that Puck has done a big mistake. He again calls Puck and sends him to catch Helena while he put juice on the eyelid of Demetrius के लिए भेज देता है, ताकि
वो डेमेट्रियस के आंखों में जूस डाल सके। Lysander seems tired of Hermia and searches her and tells her to leave him. Lysander and Demetrius decide to seek a place to have a fight to prove whose love for Helena is greater. The two women go to their separate way, Helena hoping to reach Athens, and Hermia is running behind the two men to make sure that Lysander doesn't hurt or kill by Demetrius. Oberon ordered Puck to keep Lysander and Demetrius away from each other and to remove the effect of that juice from the eyelid of Lysander. As Puck does that, Lysander again gets started loving to Hermia, while Demetrius loves constantly to Helena, none of them having memory of what has happened as it was a dream. लाइसेंडर हर्मिया से इकता हुआ दिखाई देता है और उसकी बेइज्जती करता है और उसको बोलता है कि वो उसको छोड़ दे। लाइसेंडर और डेमेट्रियस जगह तलाश करने का फैसला करते हैं जहां पर उनको लड़कर ये साबित करना है कि किसका प्यार हेलिना के लिए बड़ा है। वो औरतें अपनी अलग अलग रास्ते पर जाती हैं। हेलिना एथेंस पहुंच जाने की उम्मीद करती है और हर्मिया दोनों मर्दों के पीछे जाती है कि वो ये यकीन करे कि डेमेट्रियस उसको चोट न पहुंचाए और कहीं मार न दे। ओबरान हुक्म देता है कि वो लाइसेंड्रस और डेमेट्रियस को एक दूसरे से अलग रखे। मीन्स वो किसको हुक्म देता है? वो पक को हुक्म देता है कि वो लाइसेंडर और डेमेट्रियस को एक दूसरे से दूर रखे और लाइसेंडर के आंख से उस जूस जो उसके आंख में डाला गया है के असर को दूर करे। जैसे ही पक ऐसा करता है, लाइसेंडर हर्मिया से प्यार करने लगता है। लाइसेंडर हर्मिया से प्यार करने लगता है जबकि डेमेट्रियस लगातार हेलेना से प्यार करता है। इनमें से किसी को याद नहीं रहता है जैसे वो ख्वाब में होते हैं। Meanwhile, Peter Quince and his group of 6 laborers have arranged to perform the play about Pyramus and Thisbe on the wedding of Theseus and Hippolyta, and they go to the forest near Titania bower of the rehearsal. Peter Quince leads the actors in their rehearsals of the play. In the meantime, Puck changes the Nickbottom's head into the head of donkey through the magic, and other workers run screamingly in terror from there. They claim that they are haunted. Nickbottom, with the head of donkey, starts singing and goes toward the place where Titania is sleeping, and juice of flower has been put on her eyelid. She is awakened by Nickbottom's singing with the head of donkey, and she sees that falls in love with that hawkman and animal. इसी दौरान में पैराक्विंस और इसके 6 मजदूर ग्रुप ने थेस्बी और पायरमस के ड्रामे को पेश करने के लिए तैयारी की होती है और वो उनको हिप्पोलिटा की शादी पर पेश करना होता है और वो जंगल में टाइटेनिया के बंगले के नजदीक अपने रिहर्सल के लिए जाते हैं। पैराक्विन अदाकारों की उनके ड्रामा के रिहर्सल में रहनुमाई करता है और इसी दौरान निक बॉटम यानी का सर जो है वो चेंज होता है और उसको चेंज कौन करता है? पक करता है। पक निक बॉटम के सर को गधे के सर में
तब्दील करता है अपने जादू से। और दूसरे काम करने वाले चीख मारते हुए वहां से दौड़ते हैं और वो मुतालबा करते हैं कि वो डर गए हैं। निक बॉटम गधे के सर के साथ गा रहे होते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहां पर टाइटेनिया सोई हुई होती है और टाइटेनिया की आंख में जूस डाला हुआ होता है। वो निक बॉटम जो गद्दा यानी कि जिसको गधे का सर होता है, टाइटेनिया जाग जाती है और उसको देखती है और उस आधे जानवर और आधे आदमी से प्यार करने लगती है। So Oberon gets the chance to take the channeling boy away from her and makes him not. Having achieved his goal, Oberon releases Titania and order Puck to remove the donkey's head from the neck bottom and arranges everything as they think that they have been dreaming when they will wake. Puck distracts Lysander and Demetrius from the Helena's love. Eventually, they all find themselves sleeping in a glade. They fall in a sleeping once again. Puck puts the flower juice on the Lysander's eyelid to love back Hermia and claims that all will be well in the morning. The Fairies disappeared, and Theseus and Hippolyta arrive there as early in the morning and find lovers are sleeping in a glade. They wake up the lover, and Damaris no longer loves Hermia, and all the lovers believes that they are still in dream and can't recall what has happened. इसलिए ओबरॉन को उससे दूर ले जाने का मौका मिलता है और उसे नाइट बनाने का मौका मिलता है। वो अपने मकसद को हासिल करके ओबरॉन मीन्स टाइटेनिया को आज़ाद कर देता है और पॉक को हुक्म देता है कि वो गधे के सर को निक बॉटम से हटा दे और ये हर चीज़ को ऐसी तरतीब दे कि वो सोचें कि वो ख्वाब में है जब वो जाग जाए। पॉक लाइसेंडर और डेमेट्रियस की तवज्जो हेलेना की प्यार की तरफ से हटाता है। बाद में वो सब अपने आप को खुले हुए आसमान के नीचे सोए हुए महसूस करते हैं। वो तमाम एक बार फिर सो जाते हैं। पॉक लाइसेंडर के आंख पर जूस डालता है कि वो वापस हर्मिया से प्यार करे और मुतालबा करता है कि सुबह तक सब कुछ ठीक होगा। परियां वहां से गायब हो जाती हैं। थीसिस और हिप्पोलिटा वहां सुबह को ही पहुंच जाते हैं और लवर को खुले आसमान में सोए हुए उनको मिलते हैं। वो लवर को जगाते हैं। डेमेट्रियस अब हर्मिया से प्यार नहीं करता और तमाम लवर ये यकीन करते हैं कि वो अभी ख्वाब में है और वो याद नहीं कर सकते हैं कि क्या हुआ। But the father of Hermia still is not allowing Hermia to marry Lysander. But the Duke of Athens allows all the lovers to marry according to their own will. After that, the old Nick Bottom is also being awakened, and he decides to do that he must have experienced a dream. At the Peter Quince house, he and his whole team is worried about the missing of Nick Bottom. Peter Quince feels sorry that he is only one who can play the main role in the play of Pyramus and Thisbe. In the meantime, Nick Bottom returns
returns and actors get ready to perform the role in the play. At the end, Theseus and Hippolyta get married and watch the play with the lovers. But the play has been performed very badly as guests laugh on it as it seems a comedy, and then everyone retires to bed. लेकिन हामिया का वालिद अभी भी हामिया और लाइसेंडर यानी हामिया को लाइसेंडर से शादी की इजाजत नहीं देता है, लेकिन एथेन का बादशाह तमामों को अपने ख्वाहिश के मुताबिक शादी करने की इजाजत देता है। इसके बाद वो तमाम चले जाते हैं। निक बॉटम भी जाग जाता है। वो ये फैसला करता है कि वो भी ख्वाब में था या उसने भी ख्वाब देखा है। पैटर क्विंस के घर पर वो मीन्स पैटर क्विंस और उसकी पूरी टीम निक बॉटम के गुम जाने का गम कर रहे होते हैं। पैटर क्विन भी अफसोस कर रहा होता है कि निक बॉटम ही है जो पायरमस और थेस्पी के ड्रामे में नुमाया रोल अदा कर सकता है। इसी दौरान निक बॉटम वापस आता है और अदाकार ड्रामे में रोल अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार थीसस और हिप्पोलिटा एक दूसरे से शादी करते हैं और ड्रामा लवर के साथ बैठकर देखते हैं। लेकिन ड्रामा बहुत बुरा होता है क्योंकि वहाँ पे जो गेस्ट्स हैं वो हंसते हैं इस ड्रामे पे और इस तरह से तमाम जो है वो सोने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से ये ड्रामा जो है अपने इख्तिताम को पहुँचता है।